Good afternoon, everyone. Good afternoon. Please let me know that my voice is audible and the screen is visible to you all. Guys, please let me know that I'm audible and the screen is visible to you all. Anybody? Can anybody tell me in the comment section? Can anyone confirm, please, so that I can ensure everything is fine and I can start with the session? Okay, so I'll start. So there's no comment. I think everything is fine then. Okay, right? So I'll start. So today we are covering lecture number 6. So basically this is part 2 of lecture number 5. Part 2 of lecture number 5. So don't get confused. Basically it is lecture number 6. Which lecture number 5 was soil and water conservation. Part 1 we have covered yesterday. And today we are going to cover part 2. We are going to cover part 2. Okay. So I hope you all have prepared all the chapters that we have discussed so far, right? I have told you what are the important topics, what are the important chapters and important questions we are discussing here. We are discussing all kind of important questions in this session. Also students, if you want to cover this particular, some topic of this particular chapter in detail way, so we have already recorded it in ARD Simplified series. You can get the link of ARD Simplified series in the comment section. So there are about four videos of ARD Simplified where we have covered different topics of soil and water conservation chapter. So I request you, if you want detailed explanation, you can go and check that video. Okay. So I hope, yes, thank you, Akansha. So with that I'll start. And this is the chapter. This is the question number 1 for you. And this was the question which was asked to you in 2018. So which soil is most extensively found in India? You have to tell me out of the given option, India में कौन सी soil extensively, which of the following soil is extensively found? Is it alluvial soil, laterite soil, red soil, black soil? None of the above. Okay. So please let me know. Quickly, everybody, I want everybody of you to please participate. Okay, I want everybody to please comment and participate here and please try to answer these questions. So students, it's very important that you learn what are the different types of soils which are present in India or found in India, right? So we have soils like alluvial soil, right? Then we have a black soil. Then we have desert soil, right? Then we also have red soil in some part of our country. We also have forest and mountain soil. Okay. Along with this, we have saline soil in some areas, right? And also we have peaty and marshy soil. Clear? So there are different types of soils which is found in India, and students, for this, very good, right answer will be alluvial soil. So out of the all soil which is present in India, which is found in India, alluvial soil is the most predominant in our country. Second largest is black soil. Okay, so it is important, you have to learn that alluvial soil is found most extensively in India, followed by, in the second position, it is black soil. Okay. So I hope this question is clear. Moving to the next question,
अगेन 2018 में पूछा गया था, which of the following soils has the highest available water capacity? Okay, your options are sandy soil, clay soil, sandy loam, silt loam, or none of the above. What will be the answer? Highest available water capacity किस soil में होती है? You have to tell me. Please quickly give me the answers. Quickly give me the answers. Very good. Very good. Anybody else? So answer will be clay loam soil. Okay, clay loam soil. So students, we know that in general clay soil have more pore space, more porosity basically. ठीक है? Porosity is highest in clay soil. So therefore water retention capacity is also highest for the clay type of soil. So in soil where clay is present, water retention capacity will be more because they have more porosity or more pore space, more space for water to enter, right? So answer will be clay loam. Next question, which of the following is our major nutrient? Major nutrients कौन से हैं? ठीक है? So students, it's very important that you cover all the nutrients that are required by the plant, and all these nutrients are absorbed by the plant root from the soil itself, right? So we have different types of nutrients. We have macronutrients. ठीक है? Among micro we have some primary macronutrients, and secondary macronutrients. Then we have micronutrients. Okay, so macronutrients are basically those nutrients which are required in large amount, which plant required in large amount, right? They are macronutrients. Then we have some micronutrient which is required by the plant in smaller amount, right? Such nutrients are called micronutrients. So students, among macronutrients we have primary macronutrients, which is your nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. And then we have secondary macronutrients which include your calcium, magnesium and sulfur, right? So here major nutrient you can see potassium, nitrogen, phosphorus is in the option. So answer will be option D, which is all of the above, right? Very good, very good. All those who have given the right answer. Chalo, next question. Again in 2018 it was asked, which of the following soil has the best water retention? Okay, so we have again covered this in the previous question also. So best water retention. Now you please, all of you give me the answer now. I have already explained this to you. This question is repeated again. So please give me the answer now. ठीक है, answer will be clay soil. Okay, I have already told you the reason. The reason is that clay soil has more porosity, more pore space, hence it has the highest or best water retention. Okay, next question for you that was asked in 2019. Black soils are formed from which of the following soil orders? Okay, so students, you have to also learn about soil orders. There are in total 12 soil orders. ठीक है, you can learn them by remembering this short form, which is AVA, GAMI, house. ठीक है, this is a short trick through which you can remember all the 12 soil order. And how to remember it? See, A is for ARD soil, B is for vertisol, A again is alphy soil, G is jelly soil, again A is for andy soil. So there are 3 A's. One is for ARD soil, one is for alphy soil, and another is for andy soils. ठीक है, then we have molysols, insectisols, histosols, oxysols, ultisols, spodosols and antisols. So this is how you remember all the 12 soil orders. And your black soils, ठीक है, I hope you have given the right answer. So black soils are made by vertisol soil order. ठीक है, जो आपका vertisol soil order है, that from that black soils are formed. Clear? So basically students, यहाँ पे alphy soil से बनती है आपकी red soil, okay, और antisols से बनती है आपकी alluvial soil. Okay, what are jelly soils? Jelly soils are the soil order which are found in permafrost condition. What is permafrost? Where there is permanent freezing condition, like your Arctic and Antarctic region, where
throughout the year there is a freezing condition. In such areas jelly salts are found. Okay, chalo next question. Which of the following is a pH value of alkali soil? pH value of alkali soil, quickly give me the answer. ठीक है, so we know that we have some problematic soil. Okay, we have some problematic soils. So students, these problematic soils are due to the presence of salts in them, right? So based on the presence of salt we have alkali soil. ठीक है, then we have saline soil, and then we have saline alkali soil. ठीक है, so what will be the answer for this question? First give me the answer, then I'll explain to you. ठीक है, very good, answer will be 8.5 or more than 8.5 you can say. ठीक है, so students, alkali soil क्या होती है? In alkali soil free sodium is present, sodium ion, free sodium ion is present in more amount. ठीक है, in saline soil salts are present, it can be sodium salt, calcium salt, magnesium salt. Okay, sodium salt, calcium salt or magnesium salts are present. And in saline alkali soil both type of things are present, both characteristics of alkali and saline is present, that there will be some free sodium and some amount of salts. ठीक है, salts भी present है, free sodium भी present है. Now students, when we talk about pH, तो pH जो है that will be more than 8.5 for your alkali soil. ठीक है, okay, so students, basically the thing is here, जहाँ पे salts ज़्यादा होंगे वहाँ पे pH ज़्यादा होगा, right? So make a correction here, it will be less than 8.5, it will be less than 8.5. ठीक है, pH जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे, जहाँ पे salt ज़्यादा होगा वहाँ पे pH ज़्यादा होगा, तो salt saline में ज़्यादा है तो pH यहाँ पे 8.5 होगा, right? alkali में sodium present है, salts present नहीं है, there is sodium ion present, no salt, so pH will be less than 8.5. and in saline alkali you can consider pH as 8.5. ठीक है, तो here answer will be less than 8.5, not 8.5 or more than 8.5. clear? चलो, please students, I have already covered this problematic soil topic in ARD static video. Do watch that video, you will understand the concept behind all these soil. ठीक है, और how to remember all these things. Which of the following is the most dominant factor of soil degradation in semi-arid zone in India? What will be the answer of this question? Please give me the answers. Is it deforestation, soil erosion, overgrazing, microorganisms, or none of the above? ओके, सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेमी एरिड जोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेमी एरिड जोन्स में सॉइल इरोजन इज मेन रीजन और मेन फैक्टर अबाउट सॉइल डिग्रेडेशन. क्योंकि यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर इज लेस, सॉइल इज वेरी लाइट इन वेट, लाइट टेक्सचर की सॉइल प्रेजेंट होती है, मोर ऑफ सैंडली सॉइल इज प्रेजेंट and it is more prone to the soil erosion. ठीक है, चलो next question is which type of soil occupy the maximum area in India? Okay, again the question is repeated in 2020. yes, arid and semi arid region में basically the region where we have less rainfall. Okay, so for this question answer again I have told you alluvial soil. तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ था 2020 में. ठीक है, 2020 में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज यूरिया हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ डैश विद डैश परसेंटेज. हाईएस्ट कंटेंट ऑफ डैश विद डैश परसेंटेज. व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सी रिगार्डिंग द प्रॉब्लमैटिक सॉइल,
प्लीज वॉच द ARD स्टैटिक वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन दैट देयर इन डिटेल। कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज उस वीडियो को देख लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ओके, आंसर हियर विल बी नाइट्रोजन। तो यूरिया क्या है बेसिकली स्टूडेंट? यूरिया इज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर. It is having nitrogen content, right? And it is having at least 45, it is having, sorry, not 45, 46% nitrogen in it. ठीक है, तो you have to remember few important fertilizer names and what is the amount of nutrient that is present in that particular fertilizer. Very good. Moving to the next question, which of the following is the point below the wilting point at which water aggregates are formed and formed near the surface? ठीक है, बेसिकली इट इज आस्किंग टू यू कि बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट, व्हाट इज दैट वाटर विच वी हैव वेयर वाटर इज एग्रीगेटेड और वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल वेरी टाइटली। ठीक है, उस वाटर को क्या कहते हैं? उस वाटर को क्या कहते हैं? यूरिया के बारे में देखो, यूरिया के बारे में क्या एक्सप्लेन कराना है? यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर देखो, आपके जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। फॉस्फरिक फर्टिलाइजर आर फॉर प्रोवाइडिंग फॉस्फरस एंड देन वी हैव पोटेसिक फर्टिलाइजर फॉर द सप्लाई ऑफ पोटेशियम, राइट। तो यूरिया जो है वो आपका एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 46% रहता है। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है नाबार्ड के लिए, जस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स एंड देयर परसेंटेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिसिटी। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिसिटी? बेसिकली इन दिस व्हाट हैपेंस, वी हैव, देखो, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल वाटर। फर्स्ट वी हैव इज अ ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? Gravitational water is that water which is present in macropores. Macropores, ठीक है, तो जो पानी मैक्रोपोर्स, बड़े पोर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस मैक्रोपोर और वाटर दैट इज प्रेजेंट इन मैक्रोपोर विल ड्रेन फास्ट, बिकॉज पोर्स जब बड़े साइज का होगा, स्पेस जब ज्यादा होगा, उस पे ग्रेविटी इजीली काम करेगी एंड दिस पोर्स, these macropore will drain fast, right? Then we will be left with the water which is present now in micropores. ठीक है, माइक्रोपोर्स में होगा क्योंकि मैक्रोपोर्स तो ग्रेविटी के कारण खाली हो चुके हैं ना, यहाँ से पानी निकल गया है, तो अब माइक्रोपोर्स में पानी होगा, तो वाटर दैट इज प्रेजेंट इन माइक्रोपोर्स इज देयर, इट इज हेल्ड बाय माइक्रोपोर्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, ठीक है, तो बेसिकली कैपिलरी एक्शन क्या है? छोटे 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 जो आपके माइक्रोपोर्स होते हैं, दे फॉर्म अ कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यू नो, इफ यू नो दैट कैपिलरी क्या होती है? बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं विच कैन होल्ड वाटर इन देम, विच कैन होल्ड वाटर इन देम अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। सो यहाँ पे जो माइक्रोपोर्स है सॉइल में, दे विल ऑल्सो होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी एंड दिस वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। ओके, this water is known as capillary water which is present in micropores. Now next we have is the hygroscopic water. Hygroscopic water क्या होता है students? See, once we have water in capillaries or micropores, what will happen? Plant will absorb water from the micropores. Okay, so basically water that is present in micropore is also the available plant to the available water to the plant. ठीक है, अब क्या करेगा? प्लांट विल एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दीज माइक्रोपोर्स. व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ टाइम दैट नाउ माइक्रोपोर्स आर आल्सो एम्प्टीड. माइक्रोपोर्स से भी पानी अब खत्म हो चुका है, राइट? अब प्लांट ने एब्सॉर्ब कर लिया वाटर पूरा. नाउ नेक्स्ट कम अनदर टाइप ऑफ वाटर विच इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है स्टूडेंट्स? अगेन दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द क्रॉप प्लांट, और ये जो वाटर है दैट इज हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल. सॉइल के जो पार्टिकल है वो अपने अराउंड एक थिन फिल्म बना देते हैं. सॉइल के जो पार्टिकल है वो अपने अराउंड एक थिन फिल्म बना देते हैं वाटर की. ठीक है, एक थिन फिल्म बना देते हैं वाटर की. दैट वाटर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है, उसी को ही हाइग्रोस्कोपिसिटी कहा जाता है. क्लियर? ओके दीपज्योति, देखो डिकम्पोजिशन प्रोसेस यूरिया की इंपॉर्टेंट नहीं है,
सो वी विल नॉट डिस्कस दैट, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग जो मुझे पता है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरिया का डिकम्पोजिशन आपसे नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट गो फॉर एमोनिफिकेशन, कैसे होता है यूरिया, कैसे डिकम्पोज करता है और कैसे उससे नाइट्रोजन रिलीज होता है, किस फॉर्म में होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डोंट गो इन दैट डिटेल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज deficiency of which of the following nutrient cause purple spot on leaf that eventually changes their color into brown, orange or yellow, ठीक है। so now deficiency symptoms, deficiency symptom जो deficiency symptoms होते हैं that we see in plants are also important, okay। okay sorry students, actually I am not feeling well today, so ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बट हाँ ठीक है, we also have to study, you'll also have to study about the nutrients, okay, and their deficiency symptoms. So whenever you see purple spot or purple discoloration or purple coloration, so this is basically related to the phosphorus, this is basically related to the phosphorus deficiency. Whenever a plant undergoes or suffer from phosphorus deficiency, you will see the lower leaves of the plant will show purple coloration, ठीक है, पर्पल कलरेशन होता है लोअर लीव्स, जो प्लांट की लोअर लीव्स है उसमें, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, what is the term for the stage of erosion when it become exhaustive leading to the formation of finger like projection, ठीक है। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक yesterday also we have covered some part of erosion, so now you tell me finger like projection किस टाइप के वाटर इरोजन में बनते हैं, क्विकली। Is it your sheet erosion, rill erosion, gully erosion, saltation, suspension? What will be the answer? Okay, so answer will be rill erosion, ठीक है, answer will be rill erosion. I have explained this to you in the yesterday class also कि rill erosion क्या होता है, कि on your bare agriculture land or land which will not have any kind of vegetation, their small rills will form, small rills are formed or finger like projections are formed, and water will start flowing in these rills or in these finger like projection that are formed, ठीक है, इसको ही आप rill erosion बोलते हो, clear। okay, moving to the next question, salt concentration in soil is measured by electrical conductivity. What is SI unit of electrical conductivity? तो स्टूडेंट्स ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपको SI यूनिट पूछी गई थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या है, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। anybody with the answer here? अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू वी कैलकुलेट द सॉल्ट, वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन एनी सॉइल, ठीक है। तो वी हैव एल्कली सॉइल, then saline alkali soil, okay, and then we have saline soil, okay। alkali soil में सोडियम प्रेजेंट है ज्यादा और saline alkali soil में सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है और saline soil में सॉल्ट्स ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिस सॉइल में सॉल्ट्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, जिस सॉइल में सॉल्ट्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम क्या करते हैं, सॉइल सोल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उससे क्या होता है ये जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जितने ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ईसी का जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, राइट। और अगर हमारी जो सॉइल है वो एल्कलाइन है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट्स कम है, फ्री सोडियम है, तो जो यहाँ पे ईसी का वैल्यू है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द सलाइन सॉइल। तो ईसी का वैल्यू फॉर अल्कली सॉइल इज मोर देन 4 मिलीमो पर सेंटीमीटर और सलाइन के लिए लेस देन 4 मिलीमो पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली
SI यूनिट इज डेसीसाइमन पर मीटर, डेसीसाइमन पर मीटर, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलीमो पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो और डेसीसाइमन पर मीटर भी इसकी SI यूनिट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर CN रेशियो एंड द प्रोसेस इट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन CN रेशियो और उस जो प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर कि हाई CN रेशियो में मिनरलाइजेशन होगा, लो CN रेशियो में इमोबिलाइजेशन होगा, हाई CN रेशियो में इमोबिलाइजेशन होगा, या CN रेशियो हैज नो इन्फ्लुएंस और लो CN रेशियो में नाइट्रोजन लॉस होगा। व्हाट विल बी द आंसर? Excuse me. Okay, so what will be the answer for this? Okay, so students here right answer will be option C, ठीक है। देखो अब इसको भी समझ लेते हैं। CN रेशो क्या है? CN रेशो इज बेसिकली कार्बन इज टू नाइट्रोजन का रेशो, ठीक है, कार्बन इज टू नाइट्रोजन का रेशो। देखो अगर CN रेशो आपका किसी ऑर्गेनिक मैटर, देखो हम जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में तो ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है एंड रिलीज न्यूट्रिएंट इन सॉइल, राइट। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज एंड रिलीज न्यूट्रिएंट इन सॉइल, क्लियर। नाउ if any organic matter, like we have two type of organic matter, one organic matter have CN ratio of 30:1, other have CN ratio of 100:1, ठीक है। दो टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, 30:1, 100:1. Now students, you can see here number of nitrogen are more as compared to here, because there is one nitrogen for every 30 carbon, and here only one nitrogen for every 100 carbon, right? So CN ratio is very wide here and it is narrow in this case, right? So जब हमारे पास ये situation होती है when we have less wide CN ratio or less difference in CN ratio, क्या होता है कि यहाँ पे mineralization होगा। mineralization, what is mineralization? That is release of nutrient from decomposition of organic matter. क्यों? क्योंकि microorganism will act on this organic matter. Some amount of nitrogen will be taken up by the microorganism for making the proteins. Microorganism को अपने लिए भी proteins बनाने हैं, right? So that some amount of nitrogen will be taken by microorganism for making proteins for themselves, and कुछ part will be released into soil solution, ठीक है। कुछ part will be of nitrogen will be released into soil solution that will be ultimately taken by our crop plant. But if this is the scenario where CN ratio is very wide, what will happen? What will happen here? Microorganism, they will first consume nitrogen for themselves. Okay, they will first consume nitrogen for themselves, or not only here, whatever nitrogen that is present in soil solution, also they will consume that nitrogen in order to decompose this organic matter, ठीक है। तो soil solution में जो होगा या इसमें जो nitrogen पहले present है, वो nitrogen is utilized by microorganism for themselves first, right? Then what is happening here? Here the process which is happening is known as immobilization. Immobilization क्या होता है कि जो आपका nutrient present है soil solution में और nutrient that is there in the soil or in the organic matter, it is utilized by the microorganism for themselves. तो जो soil में nitrogen था वो content कम हो जाएगा, ये भी प्रोसेस होता है। इट्स नॉट कि हम हमेशा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे उससे न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ेगा ही। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर कोई क्रॉप का स्ट्रॉ है, लाइक पैडी स्ट्रॉ है, जहां पे CN रेशो 100:1 होता है, तो पहले इमोबिलाइजेशन होगा। पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारा न्यूट्रिएंट खुद के लिए यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर। लेटर ऑन जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपनी डिमांड पूरी हो जाएगी, देन दे विल लीड इट, उसका जो CN रेशियो है वो कम हो जाएगा, देन दे विल दैट विल हेल्प इन रिलीजिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल। सो इट इज ऑलवेज सेड कि आपको वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना चाहिए वेयर द नाइट्रोजन इज टू कार्बन इज टू नाइट्रोजन रेशियो इज 30:1. बेसिकली आइडियल CN रेशियो इज 30:1.
ठीक है, आइडियल CN रेशियो इज 30:1, ये चीज आपने याद रखनी है। इसीलिए जब हाई CN रेशियो होता है तो उस केस में इमोबिलाइजेशन होता है। ओके, इमोबिलाइजेशन होता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट मोबाइल इन सॉइल एंड प्लांट सिस्टम। ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मोबाइल है सॉइल एंड प्लांट सिस्टम में? प्लीज गिव मी द आंसर। ओके, गिव मी द आंसर। Okay, thank you so much, students. But yeah, I'll just quickly cover this chapter, cover this class, and then tomorrow it's holiday, so I'll take rest, and we'll continue from Monday onwards, right? Okay. Thank you so much. And चलो, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? Which of the following nutrient is most mobile in soil and plant system? ठीक है, मोबाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली देर आर सम न्यूट्रिएंट which are highly mobile like nitrogen, phosphorus and potassium. They are highly mobile. Highly mobile means they can move from one part of plant to other part, or they can move from one point to other point in soil also. So in plant, if any plant have deficiency of such nutrient like NPK, so what will happen? This plant will remove NPK from older leaves and it will send it to the ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ओल्डर लीव से ये एनपीके निकाल के अपने ग्रोइंग पार्ट में सप्लाई करेगा, बिकॉज ग्रोइंग पार्ट इज द ग्रोइंग एरिया एंड इट रिक्वायर हाई एनर्जी एंड हाई न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, राइट? सो यू विल ऑलवेज सी दैट फॉर द मोबाइल न्यूट्रिएंट लाइक एनपीके, डेफिशिएंसी इज ऑलवेज सीन इन द ओल्डर लीव्स। डेफिशिएंसी हमेशा कहाँ पे आती है? ओल्डर लीव्स में आती है। ठीक है, सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका जो बोरॉन और कैल्शियम है वो इमोबाइल होता है। इमोबाइल होता है आपका बोरॉन एंड कैल्शियम। तो बोरॉन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमेशा कहाँ पे आएगी? टर्मिनल बर्ड में आएगी, जो आपका ग्रोइंग टिप होगी, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट है ये मोबाइल नहीं है प्लांट के अंदर, राइट? दे कैन नॉट मूव इनसाइड द प्लांट सिस्टम। तो ये टर्मिनल बर्ड जो होंगे प्लांट के, टर्मिनल बर्ड या एपिकल बेड, वहां पे इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज pH वैल्यू बिलो 7 इन सॉइल इंडिकेट? ओके, सो डज इट इंडिकेट सलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, सोडिक सॉइल और न्यूट्रल सॉइल? ओके, वेरी गुड. What will be the answer for this question now? If any soil have pH value then less than 7, what does that indicate? ठीक है, very good, very good. Answer will be option C, acidic soil. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सॉइल का pH भी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सॉइल का pH भी कैलकुलेट किया जाता है. So we have a pH मीटर जहां पे न्यूट्रल pH is 7. न्यूट्रल pH is 7. ठीक है, 7 से बिलो होगा तो that is acidic, that is considered acidic, and 7 से above होगा that will be considered as basic. ठीक है, 14 तक होता है और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल pH जो है वो आपका 7 होता है, अराउंड 7, तो वो न्यूट्रल pH माना जाता है. ठीक है, ठीक है, तो अगर बिलो 7 हुआ तो that soil will be considered as acidic soil. अगर किसी soil का pH more than 7 हुआ then that soil will be considered as basic soil or saline soil. ठीक है, चलो next question. Okay, here option is in the screen, but चलो question देख लेते हैं. Which of the following types of soil erosion is caused primarily by the impact of raindrop breaking apart soil aggregate? ठीक है, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया है. इट इज स्प्लैश इरोजन. ठीक है, कल की क्लास में ये डिस्कस हुआ था. स्प्लैश इरोजन क्या है? स्प्लैश इरोजन क्या है? जब रेन ड्रॉप हिट बेयर सॉइल, रेन ड्रॉप हिट करती है बेयर सॉइल को, तो सॉइल पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं? दे ब्रेक अपार्ट एंड दे गेट कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज स्प्लैश इरोजन. ओके, अगेन ठीक है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटूर बंडिंग इन सॉइल conservation? So students, contour bunding, I think I have discussed this question yesterday also. Contour bunding का purpose होता है कि we have to reduce water runoff and soil erosion on sloped land. तो slopy land है, इसमें हमें क्या करना है? हमें runoff को and soil erosion को कम करना है. ठीक है, so okay. Then next question, which of the following is a biological soil conservation measure aimed at controlling wind erosion in dryland areas?
ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगेन आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड द अनएडिटेड पीपीटी, ठीक है, तो जो फाइनल पीपीटी थी वो डाउनलोड करना भूल गई हूँ, ये पुरानी पीपीटी डाउनलोड कर दिया, इसीलिए एनिमेशन नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए आंसर्स ऐसे दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अगेन सो सॉरी फॉर दिस, बट या सो चलो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, इट इज कॉल्ड शेल्टर बेड प्लांटेशन। अब शेल्टर बेड प्लांटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये फील्ड है, ये फील्ड है इन एनी एरिया वेयर विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, ठीक है, अगर विंड वेलोसिटी विल बी वेरी हाई, this soil will be prone to wind erosion, this soil will be prone to wind erosion. Now what we want to do, we want to reduce wind velocity, so for that what we'll do, we will grow some plant across this field, ठीक है, some plants will be grown across the field so that इन प्लांट से क्या होगा, जो आपकी विंड वेलोसिटी है वो थोड़ी सी रुक जाएगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, और जो सॉइल है दैट विल गेट सेव्ड फ्रॉम बीइंग इरोडेड, ठीक है, सो दैट इज द shelter bed plantation. Okay, so I think so this was the last slide, ठीक है, so students ठीक है, if any question is left from this chapter which I feel is important and I haven't covered, so I'll try to take it in the next class. So next class is of regarding irrigation management and water resources, right? That is again someone related concept with your soil science, so no issues if I feel कि कोई question रह गया है इस particular chapter का, and whatever final PPT I have made, अगर उससे कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, सो वी विल मीट ऑन मंडे नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज. Okay, is there any doubt, is there any query? Please let me know. Okay, so I think there is no queries, right? ठीक है, so we'll meet on Monday. अगर कोई query है, कोई doubt है, you can ask me on Monday also, ठीक है. Monday को I'll try that if anything is missed from today's class, so I'll cover that also. We will cover the next chapter, which is water resources and irrigation management. Clear? So that's all. Thank you for joining this session, students. Okay. I again request you that if you want detailed explanation of few important chapter, ARD Simplified videos are there. There are around 4 ARD Simplified videos on the soil and water conservation chapter. Just watch these videos, you will get the concepts. Okay, few important concept का explanation बहुत अच्छे से किया गया है वहाँ पे. Clear? So that's all, and thank you for joining. You're welcome, Isha, Vishal, Sarumati and Nevo. Okay, thank you guys for joining. That's all. Thank you so much.